motion under gravity which is a subtopic under our chapter motion in straight line of class 11th physics. Okay, here let's first discuss about if we throw a particle or a body with an initial velocity of u in vertically upward direction, then what will happen? Is it going to the outer space? Not, definitely not. It will going to return after a while to the exact same place. It will follow a trajectory like this and came back to the same point, isn't it? Okay. Here we are going to discuss about 3 to 4 things. First of all, the maximum height attained by the object. Then the time spent through the whole trip by the object, how much time spent in air, that's capital T, the time of flight of that object. Okay, then the time taken by the object to reach the topmost point, then the time taken by the object to reach the topmost point, which is time of ascent, and the time taken by the object to come back to the same point, the time for descent, TD. Okay, now we are going to derive all these quantities and their expressions one by one. Achha. If we ignore here the air drag, then the only force acting on the object throughout this whole journey is the gravitational force due to our earth, which is mg downward, and this force produces an acceleration of g in downward direction throughout this whole journey, isn't it? Okay. Before deriving all these quantities, first of all assume that all these vector quantities here we are taking in upward direction, we'll take it as positive direction, and in downward direction we'll take it as negative direction. Okay, let's start. We can switch it. It will doesn't impact our expressions, final expressions. But let's take it. All these quantities in upward direction is positive, and all the vector quantities in downward direction as negative. Okay, let's go. Now, first of all, let's derive capital H. You can see that here the initial velocity while starting from the journey is u given to the object, and the final speed, if we took this as the final point for the displacement h, the speed will be, final speed will be 0. You can look at this. In the topmost point, at the topmost point, the speed of this pen is what? 0. Okay. Here the initial speed is u, final speed is 0, and we are going to derive the displacement h, and also we know that here the only acceleration acting on it is g downward. Right? Let's derive. We can simply use the equation of motion v square minus u square equal to 2as. Right? Acha. Here v is 0, 0 square, u is u square, and 2 acceleration is g, but its direction is downward, so minus g, and the displacement is h, but its direction is upward, so capital H, and it will be positive. Okay. Now minus u square equal to minus 2gh, isn't it? Okay. We can cancel minus from both the sides. Now come to the next slide. H will be u square by 2g. This is the expression for maximum height attained by the object. Right? Okay. Note it down. Then we are going to derive the total time of flight. That means how much time the object spent in air. Right?
Let's go. Okay. Here the object starts its journey from this point, and after t time, that means the total time spent in air, after spending in air, it comes back to the return back to the same point. That means its displacement is definitely zero. You all know this. Okay, the initial point and the final point is same, so the displacement is zero. Okay, here the acceleration is g downward. Then we can use the equation s equal to ut plus half a t square. We know here the displacement is zero. Again, u is u, time is capital T, the total time of flight. Okay, half acceleration is minus g, for the obvious reason the minus sign is coming. Then t square. Now half g t square equal to ut. I hope you can understand it. So just bring this to this side and the minus sign will get positive. Okay, as we know that t is definitely not zero. T is something non-zero quantity, right? Okay, then we can cancel out t in both the side as t not equal to zero. So we got the expression for t is t equal to 2 times u by g. This is the expression for total time of flight, t equal to 2u by g. Clear? Okay. Now let's derive the expression for time of ascent and time of descent. Acha. For time of ascent, the same case we have taken for maximum height from this point to this point. Here the initial velocity is u, final velocity is 0, acceleration is g downward. So we can take the equation v equal to u plus at, final velocity is 0, u is initial velocity is u, upward direction plus u, plus acceleration is g, downward direction minus g, time is ta, time of ascent, right? Okay. Now it will be gta equal to u and time of ascent will be u by z. This is the expression for time of ascent. Acha. If you notice one thing, the time of ascent is u by g and the total time of flight is 2 times of u by g. Right? The time of ascent is u by g and the total time of flight is 2 times of u by g. As we know, the time of ascent plus time of descent is total time of flight. So we can say that the time of ascent is total time is 2 times time of ascent. That means time of descent is exactly same with the time of ascent, u by g. Right or wrong? As time of ascent plus time of descent is equal to 1, total time of flight. So if time of ascent is u by g and the total time is 2 times of u by g, that means definitely time of descent is u by g. Is it? Okay. Achha. We got the expression for maximum height u square by 2g, time of ascent is 2u by g, time of total time of flight is 2u by g, and time of ascent is u by g. Also time of descent is u by g. Clear? Okay. Now what we conclude here, as we see here, in throughout the journey, here the acceleration acting is g downward, the initial speed is u. We can easily check that at the time of reaching the ground, the final speed will be also u. Okay. We can conclude that if we caught this motion at any random point, then we can conclude that if it took t1 second but t1 time to reach from the ground to this level, then it will also take the same time to reach at this level to ground. Again, from this level to topmost point, if t2 second but t2 time, the topmost point to this level will be taken. It will take time, for the same time it will take to reach that point also. If there is air resistance, अगर वहां पर air resistance हो तो क्या होगा देखिए.
अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो जाते वक्त, और यहाँ से ऐसे पार्टिकल जा रहा है और फिर रिटर्न आ रहा है वापस, तो एयर रेजिस्टेंस अगर होगा तो जाते वक्त उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेगी, उसका वेलोसिटी होगा ऊपर की तरफ, तो उसके ऊपर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg। अगेन वेलोसिटी के अपोज में रखता है क्या, एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस अगर है हम मान रहे तो एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स भी किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। आते वक्त क्या होगा, वेलोसिटी होगा नीचे और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, और वेलोसिटी के एगेंस्ट में लगेगा क्या, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। तो जाते वक्त क्या हो रहा है, नेट फोर्स ज्यादा हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। आते वक्त लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट में लग रहा है, इसीलिए नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस एयर रेजिस्टेंस होगा। ओके, सो वी कैन इजीली सी दैट, क्या देख सकते हैं कि जाते वक्त क्या हो रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसीलिए जाते वक्त इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और लौटते वक्त जैसे कि फोर्स भी कम हो रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एक ही डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बार क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन ज्यादा हो रहा है और एक बार एक्सीलरेशन कम हो रहा है, तो ये वाला काम क्या होगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला काम थोड़ा देर से कंप्लीट होगा क्योंकि एक्सीलरेशन कम है इसके। तो इजीली हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि टाइम ऑफ ascent क्या होगा, छोटा होगा देन टाइम ऑफ डिसेंट इफ वी कंसीडर एयर रेजिस्टेंस। If air resistance is present, then time of ascent will be more and time of descent will be, sorry, उल्टा बोल दिया, time of ascent will be less and time of descent will be more, क्योंकि एक्सीलरेशन जाते वक्त क्या है, ज्यादा है, आते वक्त कम है, इसलिए ये वाला काम जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला काम धीरे से कंप्लीट होगा। ओके, वी कैन इजीली कन्विक्ट दिस बाय डूइंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। अगर तुम्हारे पास A4 शीट है पेपर, तो उसको हाथ में लो और उसको ऊपर फेंको, तो क्या देखोगे, वो जल्दी से धक से जाके एक हाइट पर वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, जल्दी से रुक जाएगा, लेकिन गिरते वक्त धीरे धीरे गिरेगा। तो उसका मतलब टाइम ऑफ ascent क्या है, बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि A4 शीट के ऊपर एयर रेजिस्टेंस ठीक ठाक अमाउंट में लग रहा है, वो जल्दी से जाके ऊपर रुक गया, लेकिन वो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए धीरे से नीचे आया, तो टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा हुआ, टाइम ऑफ ascent क्या हुआ, कम हुआ। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है तुम्हें एंट्रेंस वगैरह में। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अगर g को 10 मान लिया जाए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, वो टाइम स्पेंड किया 4 सेकेंड्स, g 10 है, वो टाइम स्पेंड किया कितना, 4 सेकेंड्स इन एयर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, और आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एज क्या होगा। ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया हूं। तो जी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 4 सेकंड गिवन है, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना अचीव होगा, और उसका एज का वैल्यू क्या होगा, सब डिराइव कीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, आई होप आप सब कर लिए होंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हमारे पास एज का एक्सप्रेशन क्या था, u स्क्वायर बाय 2g, t का एक्सप्रेशन क्या था, 2u बाय g, राइट, बराबर। तो अगर हम h से t स्क्वायर डिवाइड करेंगे, h से t स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, देखते हैं। h है u स्क्वायर बाय 2g, t स्क्वायर क्या होगा, 4u स्क्वायर, ये बन जाएगा, इजंट इट। देखो उसका स्क्वायर होकर उल्टा हो गया, इधर आ गया, डिवाइड कर रहे थे ना, तो u स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, g एक g से कट जाएगा, फिर क्या रहेगा एक्सप्रेशन, 1/8 g। उसको अगर लिखेंगे तो h का क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है हमें, हाँ 1/8 g t स्क्वायर। देखिए, तो इधर t का एक्सप्रेशन आप, सॉरी g का वैल्यू पता है हमें क्या है, 10 है, t का क्या है 4 है, तो h क्या निकलेगा 1/8, g का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर 10,
ठीक है, क्या है 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 4, 8 से 1 4 गया, इधर 2, 2 से 1 इधर गया 4 से, ये रहा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया h इक्वल टू 20 मीटर। h क्या मिला हमें 20 मीटर मिला, हो गया। ये सब जिसका 20 मीटर आया है वो खुद को एक शाबाशी दीजिए, जिसका नहीं आया है वो मुझे एक शाबाशी दीजिए, हो गया।